खुदाम यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आप सबको अपनी हिफाजत और अपनी निगहबानी में रखे। जी, तो मेरे अजीजों, एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही अजीब काम संडे वाले दिन जर्मन के अंदर हुआ है और हो सकता है कि बहुत से लोग उससे बाखबर भी हों और बहुत से लोग हो सकता है कि उसके उससे बेखबर हों। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम इन चीज़ों से बाखबर रह सकें। खास करके ईमानदारों का बहुत ही ज़रूरी है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें और इस पर बात करते हैं। In the house of God, everyone is welcome with open arms, even robots. Like it or loathe it, ChatGPT is part of society and now part of the congregation. As Germany's churches experience a drop in numbers of pastors, this church in the Bavarian town of Fürth has the answer by using artificial intelligence. During service, this avatar preached to more than 300 people for Mass. But can we really commune with robots? I was pleasantly surprised at how well it worked, but one thing I definitely missed, of course, was simply emotionality. It was exciting, interesting, but for me it was too monotonous. The avatar spoke too quickly. Sometimes you couldn't really think in your head during the service. It wasn't personal enough. So, in this church, worshippers are no longer inspired by the words of a preacher. And while some may say this is sacrilegious, the theologian behind it insists this is the future of worship. I would say 98% comes from the machine, generally speaking. And what we're going to see is an effort of us as human beings staying out of the church service. The 40-minute service saw the bot writing the sermon, prayers, and even accompanying music. Intrigued and filled with anticipation, churchgoers queued for an hour to get front pew seats and find out just how it works. I told the artificial intelligence, we are at the church congress, you are a preacher. And the motto is, now is the time. What would a church service look like? And then it spits out a rough framework first. And then you say, okay, now why don't you do this introduction? And then she writes this introduction. And that goes on and on. You end up with a pretty solid church service, I would say. Whether you're a believer or not, the use of AI arguably brings services into the 21st century, allowing them to become more accessible and inclusive. But there's certainly no doubt it takes practice what you preach to a whole new level. Shadi Edward Stashley, TRT World. अच्छा, इस वीडियो क्लिप में आपने देखा है कि संडे सर्विस हुई है जर्मन के अंदर, मैसेज को शेयर किया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जो मैसेज शेयर करने वाला है, जो कलाम सुनाने वाला है, गॉस्पल को प्रीच करने वाला कौन था? एआई, यानी कि चैट जीपीटी के जरिए से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के जरिए से संडे सर्विस की गई है जर्मन के अंदर, जिसमें 300 लोग थे। और बाद में चर्च के बाद, सर्विस के बाद लोगों से इंटरव्यू लिए गए, लोगों से पूछा गया है कि आप सबको ये सर्विस करके कैसा लगा है। तो लोगों ने इस बात को एप्रिशिएट किया है, लोगों ने इस बात को सराहा है। मेरे अजीजों, ये वक्त है कि हम अपने आप को मजीद प्रिपेयर करें, मजीद अपने आप को तैयार करें कि आज पूरी दुनिया के अंदर ये क्या करने वाली, होने क्या जा रहा है। आपको पता होगा, मुकाशफा की किताब उसके 13वें बाब के अंदर एक आयत लिखी हुई है कि उसे उस हैवान में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत जो है वो बोले भी।